एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में. सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, सो इट इज़ अ सिंगल 6 मेम्ब्रेन रिंग टू विच इज़ अटैच एन 11 कार्बन साइड चेन. मतलब एक 11 कार्बन की साइड चेन है जो एक 6 मेम्ब्रेन रिंग से अटैच्ड है. सो इसके 3 एक्टिव फॉर्म्स होते हैं, रेटिनल, रेटिनोल एंड रेटिनोइक एसिड, और इन तीनों को हम रेटिनॉइड्स कहते हैं. सो बीटा कैरोटीन इज प्रोविटामिन which is converted to retinal by beta carotene deoxygenase. So retinal is two molecules of retinal is formed, which is an aldehyde. So retinal is oxidized to retinoic acid and converted to retinol, which is alcohol, by retinal aldehyde reductase. सो अगर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज देखें तो ये जितना भी प्रोसेस है, दैट कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन टू रेटिनल एंड टू रेटिनल टू रेटिनोल, दिस ऑकर इन इंटेस्टाइन. सो इंटेस्टाइन में दिस विल रेटिनोल विल गेट एस्टेरिफाइड विथ पाल्मिक एसिड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू काइलोमाइक्रोन्स एंड डाइटरी लिपिड्स टू लीवर, एंड वहाँ से एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यू में ट्रांसफर होगा बाय रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन RBP. And retinoic acid binds to albumin for transport. So sources are fish liver oil or cod liver oil is the richest source. It is also found in animal liver, milk, dairy product, dark green leaves, spinach, yellow, red fruits or vegetables like carrot, tomato and peaches. So functions देखें, so most important function is rhodopsin cycle, which is also called walled visual cycle. So visual purple is rhodopsin, which is 11 cis retinal opsin, and rhodopsin is visual pigment of rod cells of retina. जो retina में rod cells होंगे उसका visual pigment है. So this 11 cis retinal opsin के साथ जब light combine हो रही है, then it will undergo isomerization to all trans retinal, और इस opsin में conformational change होगा, due to which ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट होगी एंड दे विल बी ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स टू ब्रेन. नाउ दिस ऑल ट्रांस रेटिनल विल अंडरगो आइसोमराइजेशन बाय retinal isomerase to 11 cis retinal. Then it will again combine with opsin and lead to regeneration of rhodopsin. But ये जितना ऑल ट्रांस रेटिनल है ये सारा 11 cis में नहीं कन्वर्ट होगा. इसका कुछ हिस्सा लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से ऑल ट्रांस रेटिनोल में कन्वर्ट होगा एंड ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा एंड लीवर में स्टोर हो जाएगा, एंड ज़रूरत के टाइम पे लीवर से ब्लड में जाएगा एंड दोबारा कन्वर्जन ये शुरू हो जाएगी, एंड ऐसे ये साइकिल कंप्लीट होगा. सो व्हाट इज़ डार्क अडेप्टेशन टाइम? इट इज़ द टाइम टेकन फॉर रीजनरेशन ऑफ rhodopsin and it is increase in vitamin A deficient individuals. Next function is color vision. So 3 different retinal containing pigments are there in cone cells: porphyropsin, for red color, iodopsin for green color, and cyanopsin for blue color. Now when light falls on retina, there is bleaching of one or more pigment, and finally this 11 cis retinal bound to opsin will convert to 11 trans retinal. Next function is cellular differentiation by retinoic acid, differentiation of epithelial cells and spermatogenesis. Next is biosynthesis of cholesterol, glycoprotein and glycosaminoglycan by retinoic acid. Beta carotene acts as an antioxidant which help in reducing the risk of cardiovascular diseases. Nutritional requirement is 800 to 1000 retinol equivalent. So its deficiency अगर आइज़ में देखें तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होगा, विच इज़ अर्लीस्ट सिम्टम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड निक्टेलोपिया. देर इज़ इम्पेयर डार्क अडेप्टेशन. डार्क अडेप्टेशन टाइम इज़ इंक्रीज विच विल कॉज लॉस ऑफ विजन इन नाइट. देन इज xerophthalmia, विच इज़ ड्राई आई, ड्राइनेस ऑफ cornea and conjunctiva in case of severe vitamin A deficiency. And if the deficiency prolongs, it will lead to keratinization and ulceration of cornea, keratomalacia, which will leads to soft and milky cornea and ultimately blindness. Then is Bitot spot, which is white opaque spots developed due to xerophthalmia on either side of cornea. Then is keratinization of epithelial cell of skin, which can lead to keratosis of hair follicles, dry, rough and scaly skin.
failure of growth in children, faulty bone modeling, skin diseases, increased pressure of CSF, abnormalities of reproduction like degeneration of testes, abortion, production of malformed offspring. देन अगर ये टॉक्सिक हो गया, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो गया, देन इट कैन लीड टू इंक्रीज CSF, हेडेक, नोजिया, एटेक्सिया, एनोरेक्सिया, हेपाटोमेगाली, histological changes in the liver and hyperlipidemia. Then scaly rough skin, alopecia which is loss of hair. In pregnancy it can lead to malformation of growing fetus, and in calcium homeostasis it can cause thickening of long bones, hypercalcemia, calcification of soft tissue, bone and joint pain. Thank you.